a intro level class of light, followed by we straight away get into the topics which is like the NCERT oriented topics. Okay, classical physics has got, when you study physics, all books of physics will start with measurement, physical quantities and measurement, which you should know. Then we have chapters like mechanics, optics, that is light. Okay, अभी हम भी difference देखेंगे light और optics में क्या difference है. Optics, acoustics, sound आप पढ़ेंगे, right? इसके बाद थोड़ा सा मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन वगैरह सब आपका आ गया. फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन thermal physics, heat and all, which you're not studying anything right now, and then atomic physics or modern physics, Rutherford and all those stories come. Our job is to study this. So I'll go stage by stage. Our topic will be light, और लाइट में भी लाइट के टॉपिक को फिजिक्स में दो भाग में स्टडी किया गया है. ये सब whether NCERT tells you right now or not, don't worry, you try to understand. One will be known as ray optics. Okay, sorry. One is ray optics and one is wave optics. पहले दोनों का मीनिंग समझते हैं. Ray optics and wave optics. In order to understand ray optics and wave optics, we need to go back to sun, right? What is the sun giving me? The sun is giving me a radiation which is better known as the EMS or the electromagnetic spectrum. From the sun, you are getting electromagnetic spectrum. The best way to identify it is, 1 minute. I think it's taking up now shapes, automatic shapes. Let me cancel that. Right. Okay. The best way to remember it is Gadi X UV in my range. इसको थोड़ा राइम की तरह याद कर लीजिए. गाड़ी X UV in my range. गाड़ी stands for gamma rays. Okay. X obviously you know stands for X rays. UV stands for ultra or ultraviolet rays. IN stands for infrared rays. Mic stands for microwave. Okay. And range stands for radio waves. Sound के chapter में आपको last year बता चुका था. Our study is today going to happen out here. This is a very short band. ये band बहुत ही छोटा है. This band is something around 400 nanometers to 700 nanometers. Okay, 400 to 700 nanometers. याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. So here what we have is our VIBGYOR. VIBGYOR. And this is your visible portion of light. Are you understanding? हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं ग्रेड 10 में. ना इस साइड पढ़ने वाले हैं ना इस साइड पढ़ने वाले हैं. इसको ड्रॉ करने का मतलब था कि आप बहुत छोटा चीज पढ़ रहे हो. So light is coming from where? And light comes from electromagnetic radiation. And electromagnetic radiation is coming from electromagnetic waves. Waves दो तरह के होते हैं. Mechanical, electromagnetic. Mechanical waves are the waves which need a medium to go. Like sound waves. No air, it doesn't go. Light does not need any medium because it's an electromagnetic wave. It travels from sun across the space to us. समझ में आया? So we are going to study about light out here. यहाँ भी दो चीज है. इस light को जब हम पढ़ते हैं in science, light is a very interesting concept which has got dual nature. Dual nature means light is also seen under particle nature as well as wave nature. ये दोनों चीज को समझते हैं. Light has dual nature. Is light a wave? Yes. Is light a particle? Yes. For different principles and different impacts or effect or observations, ये अपना बहरूपिया है, ये अपना रूप बदलता है. For example, casting shadows, reflection. There we say it is a particle theory of light. Means light has got a lot of particles which flow at a great high speed. Each particle being said to be a photon. Higher classes में आपको जरूरत होगा. Each particle being said to be a photon. Whereas wave means light also travels like a wave. Now there is a very nice thing written in grade 12 NCERT book. बचपन से हम पढ़ते आते हैं. Light travels in a straight line. Light travels in a straight line. That was in younger days. So as you grew up, light भी बड़ा हो गया. और बड़े होने के बाद light will now bend around the corners. Only this room is illuminated. Why am I seeing little bit of light in the other room also? The light is not switched on. There is some sort of bending of light that happens around the corners. ऐसे कुछ like phenomenon होते हैं. Diffraction, you will study in grade 12. Interference,
polarization. These cannot be explained by particle theory of light. There we follow what is called as wave theory of light. Light goes as an electromagnetic wave. So coming and summarizing, we are going to study a small portion of what is called the electromagnetic radiation of sun called light. And in light shows dual behavior, particle behavior as well as wave behavior. All those that is important for us in grade 10, reflection, refraction, these all will be under particle behavior of light. इतना समझ में आया? Now concept comes, ray optics और wave optics में difference क्या है? ठीक है, ray और wave में difference क्या है? आगे जाके तो पढ़ेंगे, but let us understand the small concept of ray. ray को हम generally ऐसे दिखाते हैं, a ray in geometry. What is a ray? A ray is an impression which is continuous on one side and is terminated on the other side. दोनों side terminated होता है, segment होता है. This is a ray. Ray of light is totally a conceptualized thing. It's unreal, काल्पनिक है. Why do we conceptualize it? To understand the geometry of light. Ray optics deals with the entire geometry of optics. Geometry of optics means how light comes, how light goes, with the base assumption that light travels in a straight line और particle theory को लेके चलता है. Other way of understanding ray optics is, अच्छा, do you all people know this word called wavelength? है ना? We studied about wavelength in grade 9, and we have a relation that the speed of light is given by the wavelength multiplied by the frequency. And the speed of light की speed कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meters per second. So quite high speed. So light must also have a wavelength. That is the wavelength I'm saying, 400 nanometers to 700 nanometers. Frequency will be there. It's a wave. I didn't get you. Come again. I'll answer. बिल्कुल करते हैं, इसीलिए तो लाइट के लिए वेव नेचर है ना. इसको आप वेव नेचर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप वेव नेचर पढ़ रहे हैं. Light is a part of an electromagnetic wave. Every wave has two characteristics. A wave will have a wave speed, a wave will have a wavelength, and a wave will have a frequency. This is entire wave. जो electromagnetic wave आ रहा है उसमें एक छोटा सा पोर्शन लाइट है जिसको आप देख पा रहे हो. आप फोन कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप इसमें बात कर रहे हो. आप खाना पका रहे हो, आप इसमें खाना पका रहे हो. टाटा स्काई देख रहे हो, इसमें देख रहे हो. That's why since you have not attended us, if you ever go and see the speed of Tata Sky signal, that is also 3 into 10 to the power 8. If you see the speed of your microwave cooking, that is also 3. So what is changing? The wavelength and the frequencies. 3 into 2 gives you 6. 1 into 6 also gives you 6. 2 into 3 will also give you 6. So wavelength and frequency keeps on modulating. Whether it's the BBC radio or whether it's Star Plus, everyone is coming in this band only. Microwave and radio wave. सबकी speed बराबर है. So light has a frequency and a wavelength. So ray optics का मतलब क्या होता है? The structures that you are dealing in ray optics. What are the structures we are going to deal? Mirrors, lenses. If their size is quite bigger, substantially bigger than the wavelength of light that you are handling, all these are studied under ray optics. शायद आप समझे नहीं, सोचिए. A magnifying lens. What is the usual size? Say around 3 inches diameter. 3 inches. Is 3 inches not substantially bigger than 400 nanometers? Nano means 10 to the power minus 9. ये सब ray optics में पढ़ा जाता है. Ray optics deals with the geometry of optics. सारा चीज को mathematical geometry में study करने के लिए we start some काल्पनिक or say some assumptions like ray, the concept of ray, the concept of beam. There is nothing called a ray. A ray has been conceptualized to understand how light is propagating. All these we study under ray optics. Sir, what about wave optics? Wave optics, we will be studying those parameters where structures that we deal, whose sizes will be comparable to this. Like to understand diffraction, polarization, you cannot take this big as a hole. Not even a pinhole. इतना छोटा सा hole होगा. Young's slit experiment. Then what is a wave front? All these will be covered in grade 12. So अब आप grade 12 में जाएंगे, आपके लिए ये भी रहेगा, ray optics भी रहेगा, and wave optics भी रहेगा. In grade 10, we are going to study only ray optics. Is this much clear? So we are going to deal with geometry of light. And our topics would be, while we understand with geometry of light, our topics for this particular year will be mota mota. We'll start with
रिफ्लेक्शन, बट आज हम रिफ्लेक्शन से भी पहले जाएंगे. Then we will go into something called refraction. Okay, these are your two chapters, and there's one more chapter which I call इंसानी आंख और खूबसूरत दुनिया, ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ठीक है, तो ये एक और आ जाएगा, ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. सो देयर विल बी 3 चैप्टर्स. न्यूमेरिकल्स इसमें भी होंगे, न्यूमेरिकल्स इसमें भी होंगे. ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे. आप इससे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, इन दोनों में भर भर के न्यूमेरिकल्स होंगे. सो अंडर यस सर, आप फिर से बोलिए, टेक्स्ट बुक में लिखा है. अरे छोड़ो ना ह्यूमन आई चैप्टर, अभी शुरू. वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम वेयर, चेन्नई टू दिल्ली. अभी ट्रेन प्लेस हुआ है खाली, जब आएगा तो देखेंगे. ठीक है, अभी तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे धीरे धीरे. रेडी, अंडरस्टूड. चलो, सो वी स्टार्ट विद आवर बेसिक्स नाउ. सो वी गो इनटू लाइट. क्या क्या चीज पढ़ लिया अब तक? लाइट. लाइट इज अ पोर्शन, नंबर वन, this is a portion of the electromagnetic spectrum which is actually visible to you, which is actually visible. ठीक है, लाइट का होता है dual nature. Dual nature. Few concepts from grade 8. Today's chapter will be more about grade 8 only, right? Sir? Yes sir. Sure, what's dual nature? Can you explain again? I didn't understand. Dual nature means, beta, light as a thing is conceptualized as a particle nature. What is light? Agar koi puche, do you see light, something traveling to you? You don't see anything traveling to you. So light is considered as a particle, as well as light is also considered as a wave. There are certain phenomena which light exhibits which cannot be explained with particle theory but can be explained with wave theory. There are certain aspects which are explained by wave theory which cannot be explained by particle theory. For example, like light travels in a straight line. For us to see shadow, for us to experience reflection, refraction, everything that we want to study in grade 10. So here we are dealing light as a particle. Light is composed of high speed particles which are known as photons. इससे ज़्यादा depth आपको नहीं चाहिए. But when you go to grade 12, we also study something called diffraction, bending of light around corners. If you see a shadow, अगर आप एक shadow को देखो, shadow never has a sharp edge. You will think, no sir, shadow has a sharp edge. पूरे shadow के edge को आप magnify करते जाइए. Shadow never has a sharp edge. In grade 12, you will see there are fringes in shadow, just like a zebra's fringes. Interference होगा. Then there will be something called polarization of light. Then we will understand diffraction, bending of light around the corners. These again cannot be explained by the particle theory of light, because here light is not traveling as a straight line. Light is traveling as a wave. So that's called the dual nature of light. Light exhibits dual nature. This is for your concept purpose, not that much. It will not ask in your grade 10. Okay. Does that answer you, Ashka? Yes, sir. Okay, right. So light is a portion of the electromagnetic spectrum, and we are going to deal with the visible. The first thing that we're going to talk today is what is a ray. First of all, understand a ray is a imaginary. This is an imaginary. It's a geometric impression. क्या रे हकीकत में होता है? नहीं होता है. A ray is a geometric impression. Then why did you make a ray? Ray optics is all about understanding geometry. कहां से आया, कहां गया, क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. And all these not by theory, we are going to answer everything by geometry. So be very good with your drawings also. So a ray is represented in this manner, a straight line where the arrow points the direction of propagation of light and the tail shows where the light is coming from. क्या इतना क्लियर है आपको? तो बड़ी अच्छी बात है. इसके बाद आइए एक और टॉपिक सीखते हैं. What is known as a beam. So you know your broom of your house, broom, झाड़ू देखा है ना आपने? तो झाड़ू का जो एक सलिया है ना, वो रे है, और सारे सलियों को एक साथ लेने से बीम बन जाता है. वेरी गुड, समझ गए आप. A beam is a collection of rays. Parallel. A beam is a collection of rays. ठीक है, क्लियर. थोड़े और बेसिक में चलते हैं ग्रेड 8 के, देखते हैं आप लोगों के नॉलेज क्लियर है कि नहीं. ओके, सिंस यू आर स्टडीइंग ऑप्टिक्स,
ऑप्टिक्स में पहले ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर आप पूछेंगे सर क्या ये ग्रेड 10 के एनसीईआरटी कोर्स में है? नहीं है, पर आपके लिए जानना जरूरी है, वरना आप 12 में जाके फंसोगे। 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, बढ़िया, आप तो सब बोल दोगे ना, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। Transparent, which allow all the light to pass through them. Translucent, partially, and opaque do not allow light to pass through them at all. ये भी हमें पता है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं। आइए नंबर 2, हाउ डू वी सी, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। बहुत अच्छी बात। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 3 एक्टर होना जरूरी है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट सुंदर सा एक फूल, ऐसे, ठीक है ना, तो एक फूल, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। Then the next thing that you need here is that you should have a source of light. You should have a source of light. मैंने यहाँ पे sun ले लिया है, right? So you should have a source of light. This is number 1. फिर जिसको देखना है वो number 2, और फिर यहाँ पे होनी चाहिए आपकी सुंदर वाली निगाहें, टिक 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 टिक, eyes. So a ray of light has to fall on this object and has to get reflected to your eye. अगर ये condition meet होता है, then only we can see an object. Otherwise, we can't see an object. Now the question arises, when a ray of light is falling on this flower, isn't there ray of light getting reflected? There are not one ray, many rays are falling on it. एक रे तो होता नहीं है, बहुत सारे रेस गिर रहे हैं। अब जब बहुत सारे रेस गिरते हैं, they get scattered in all direction. उसमें से अगर एक भी आके मेरे आई को हिट कर दिया, मैं उसे देख सकता हूं। Advait is sitting very much square to me. In creating language, he is sitting square of me. I can still see him because one ray of light is coming and hitting me. But right now, if this boy, the blackboard behind me, I can't see it because whatever light is going and hitting the blackboard, none of the rays are coming and hitting me on my eyes. But if I put a big mirror in front of me so that the ray comes and hit this blackboard, hits that mirror and again can come and hit my eye, मैं ये ब्लैकबोर्ड देख सकता हूं। जैसे मेरे घूमने के बाद ही आप लोग चुटर पुटर बातें करते हो, तो मैं आपको कैसे देखता हूं, यहाँ पे आपके रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं। Have you understood? अच्छा, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसके भी 2 रहते हैं। क्या क्या होता है? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। आई होप यू नो दीज ऑल्सो। व्हाट इज ल्यूमिनस? ल्यूमिनस आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव light of their own, generate light of their own. Sun luminous है क्या? Moon luminous है? No, the moon is not luminous. An electric bulb is an example of both. A glowing bulb is luminous, whereas a turned off bulb is non-luminous. Luminous का एक और क्या है? Fireflies are also luminous. Have you understood? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट देखने का। ये सब बेसिक की बातें हो रही है। चलें आगे। All these we know. Okay. Then some again good knowledge. Let's understand the principle of reflection. What is reflection? The phenomenon due to which when light falls on an object, ये सब grade 8 में अच्छा था, when light is incident on an object from a medium and the light is sent back to the same medium, that phenomenon is known as reflection. Reflection होने के लिए क्या चाहिए? Suppose हमारे पास we have got an object, okay? We have an object like this, and you have, अब light बोलने से we are always going to talk about ray of light because we have already defined कि light तो हमने देखा नहीं है ना, light आ रहा है, तो light क्या है? ray है, ठीक है ना? So if a ray of light, now this is my object, ठीक है ना? This is my object. If a ray of light, and the ray of light is coming through a space which we call as medium, ये हम सेकेंड चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे। मीडियम, दिस मीडियम कैन बी एयर, दिस मीडियम कैन बी वैक्यूम, दिस मीडियम कैन बी वाटर ऑल्सो। जहां जहां से हमें लाइट दिखता है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू इट, एंड लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम एंड इज इंसिडेंट, वी कॉल इट इज एन इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, एंड द लाइट इज sent back to the same medium, this phenomenon is known as reflection. इतना क्लियर हुआ है? This phenomenon is known as reflection. Now question arises, सारे surfaces से reflection होता है क्या? Depends. Whenever light will fall on an object, some light will pass through, some light will always get absorbed, and some light will be reflected back. कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं. All you learn about global warming is what? When light is falling, sunlight falls on the earth,
certain amount of light is absorbed by the earth, certain is transmitted by earth to other places, and certain is reflected back. जब आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हो, then the reflected back cannot go. So क्या हो जाता है? The heat is trapped और गर्मी पैदा हो जाती है. So it's the same thing because light is also a part of wave. Sound में भी यही होता है, थोड़ा सा sound absorb होता है, थोड़ा सा transmit होगा. So reflection typically means that the phenomenon due to which a light, when light falls on an object, बड़ा ही crude level में बात कर रहे हैं अभी हम. Light falls on an object and it falls on an object through a medium and it is sent back to the same medium. This phenomenon is known as reflection. इसको थोड़ा सा और एक level depth में देखते हैं. Okay. So let's say this will be now known as what to me? This will be known as my reflective surface. है ना? This is my reflective surface. A surface which reflects light is known as reflective surface. अब जब हमने reflective surface बोल दिया तो इसमें भी कुछ एक तो बेस्ट होना चाहिए. बेस्ट, हर चीज का एक बेस्ट होता है. गुलाब जामुन सबसे अच्छा कहाँ? बेस्ट. तो बेस्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारा यही टावर AG. Silver is the best reflector. लिख लीजिए. Silver is the best reflector of light and silver will be also the best conductor of electricity. In this grade 10, it is very important. The best reflector is silver. That's why all the satellites and all, they carry a lot of silver with them. और जब वो गिरते हैं ना कहीं भी, they are for treasure hunters. Silver मिलता है वहां पे वहां. Silver is one of the best reflector. So reflective surface. Understood? आइए थोड़ा और आगे चलते हैं अभी. So let's understand. These are all grade 8 topics only which you are trying to study. Nothing new so far. Yes, sir. Some mirrors you contain aluminum. That is all. Aluminum, all are reflectors. Silver is the best. आप भी लड़का हो, भी उसमें भी एक बेस्ट लड़का होता है ना, वैसे ही है. सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. ठीक है. तो रिफ्लेक्टिव सरफेस को अभी और आगे जानने के टाइम आ गया है. सो हाउ डू वी डिनोट अ रिफ्लेक्टिव सरफेस? अ रिफ्लेक्टिव सरफेस इज डिनोटेड बेस्ट बाय समथिंग व्हिच वी कॉल एज अ प्लेन मिरर. Tell me, बच्चा, do you remember what is a plane mirror? This is not plain dosa spelling. Plane mirror. Plane मतलब like a book. A book is a plane. There's a plane mirror. ठीक है. How is a plane mirror made? Again, conceptually, plane mirror बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? When you make a plane mirror, all you need is a very thin glass plate. So let's say you have a thin glass slab. This is my thin glass slab, and on this thin glass slab, बहुत गंदा सा हुआ है. Okay. Sorry. Let me use the draw. Okay. So we have a thin glass slab like this. Okay. On this glass slab, then we will be adding what? We will add 1 minute. We'll be adding something which is known as a minute silver film. Okay, let's see. Okay. Take any glass slab and you fix a small silver film on it. This is the part which is going to add to the cost of the mirror. Plain mirrors are the mirrors which you have in your wash basin and your dressing mirror. So the cost of the mirror depends upon what is the lining. Saint Gobain mirrors, they are very costly mirrors. Modi mirrors, those mirrors are having extremely good quality. And if you see in somebody's houses where you have not spent too much on the mirror, after some time you will see like a foil coming out from the back side. Have you experienced that? From the mirror there will be a foil like thing coming out. Mirror ka back side ka coating ja raha hai dheere se. So that is because the mirror ka glass is very cheap. This lining which is there, that should be of very good quality. In fact, if you don't crumble an aluminum foil which you use for packing your sandwich, आप उससे भी बना सकते हैं, but the reflection won't be that good as it is with silver. Now to protect this, इसको protect करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे एक और layer of paint लगा देते हैं, which is a red oxide paint. Okay, this is a red oxide paint.
Red oxide means it will be just like red in color, and then you have your silver film, the silver film in between, and this is your the glass. बस ये बन गया आपका plane mirror. Understood? The red oxide is given as a protective. Again, not from, I don't see any questions on all coming in grade 10. And you stand on this side to view yourself on the mirror. Now, how is this thing shown in our diagrams, which we'll be using a lot? A plane mirror is shown in this manner. What am I doing right now? This is known as etching, E-T-C-H-I-N-G, etching. And this side is called my rough side. This is the rough side, and this side is known as the polished, or you can call this as smooth, or you can call this as the reflective side. हाँ बोलिए सर. One doubt. ये सब ग्रेड 8 लेवल बातें ही हो रही है. हाँ Like the silver film is there, so how does that add to the reflective quality? Because the glass is only reflective. ग्लास डज नॉट रिफ्लेक्ट, सिल्वर विल बी, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. ग्लास तो जो है आर पार दे देगा. हाँ सिल्वर, इसलिए आप देखते नहीं गर्मियों की जगह पे जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं लोग, फ्रंट पेन में एक सिल्वर सा ऐसे. हैव यू सीन द स्क्रीन्स? दिल्ली में वेरी कॉमन है. लाइक अदरवाइज व्हेन यू गेट इनसाइड योर कार यू कांट सिट इट, कार गर्म हो जाता है. it's a film, maybe in Hyderabad we don't use it, but Delhi it's very common. Suppose you have parked your car under the sun, so what people will do, they have got a roll sort of a thing which is fixed on the front pane, और ऐसे खोल के लगा के चले जाते हैं. So when you see the car from front side, you will feel as if some foil paper लगा के गया है. That is a very good reflector. The rough surface of the silver does not affect anything. सिल्वर का कोई रफ सरफेस होता ही नहीं है. your question is like, सर वो जो गुड बॉय का बैड क्वालिटीज है ना, गुड बॉय के बैड क्वालिटीज नहीं होते हैं. सिल्वर का कोई रफ साइड नहीं है. सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे हम देते हैं रेड ऑक्साइड कोटिंग. सो व्हेन a brand new mirror is purchased in your house, right now P Tower, lot of mirrors will come. Sometimes just go and see the back side of the mirror. It will be a orange color. That's called red oxide. वहां तो खड़े होकर अपना चेहरा नहीं देखेंगे ना, तो उसको हम कहते हैं रफ साइड. रफ does not mean uneven. Rough means the side which you will not stand to view yourself. Non-reflective surface, and the other side is called the smooth surface, and this is how it is designated. Our grade 10 will be not on plane mirror. We will be studying in grade 10 something called spherical mirrors. कहानी यहां से शुरू हो रहा है, ये समझेंगे तो जाके स्फेरिकल. आपका बुक एनसीईआरटी पहले ही स्फेरिकल मिरर शुरू करेगा. पहले इसको समझ लेते हैं, क्लियर हो जाते हैं रिफ्लेक्शन क्या है, सारे टर्मिनोलॉजीज. ओनली देन वी विल गो देयर, देन इट्स अ केक वॉक फॉर अस. ठीक है? सो वी नो अबाउट प्लेन मिरर. दिस इज ऑल ग्रेड 8 दैट आई एम टीचिंग यू. आइए, so in grade 8 we studied something more. I don't know how many of you now remember laws of reflection. एकदम रट्टू है, कोई टेंशन नहीं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आइए पहले रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री को एक अच्छे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? सो व्हाट वी डू now, since we know a reflective surface, so what is a reflective surface? A plane mirror is a reflective surface. This is my reflective surface. Clear? So how do I make it as a reflective surface? Isko main, okay, so let me etch this. So this is my plane mirror. And let me name this as MN. I have deliberately made it oblique so that it becomes clear for you. So what is my MN? We'll avoid this software. I mean, this irritates. So this is good to draw it on your pad, but not. MN is my plane mirror. Okay. So I should have a ray of light which is falling on this. So let's make our ray of light what color? Orange color. Okay, and let's take a shape. And let us name this as, say, AO. AO को क्या बोलते हैं? कोई बोल पाएगा? Very good. This is known as my incident ray. O is known as my point of incidence. Point of
point of incidence. So far clear? Okay. Now we'll try to understand laws of reflection. इतना समझ में आ गया? This is a reflective surface. Since this is a reflective surface, it supports reflection. So what is reflection? When a ray of light or when an incident light is incident on a reflective surface, this light has to be sent back to the same medium from where it is coming. अब कैसे जाएगा उसके लिए कुछ कानून की जरूरत है और वही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ इट विल गो. ऐसा थोड़ी है कि यहाँ मेरी मर्जी इधर जाए मेरा मर्जी उधर जाए, ऐसा नहीं है ना. ठीक है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ होता है उसमें हम लिखते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस. अच्छा, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता चलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत होती है और उसके हम कहते हैं नॉर्मल. एंड व्हाट इज अ नॉर्मल? अ नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर at the point of incidence. Means it is at the point of incidence with the reflective surface. ठीक है. तो कैसा आएगा नॉर्मल हमारा? और नॉर्मल, I think that was much better. Okay, so our normal will be, it should be in dotted actually. Our normal is supposed to come like this. This is my normal. Say we name this as, say, x dash. So let's name x and x dash. X and x dash is need to be the normal at point of incidence. यहाँ तक clear है? That means this angle should be 90 degree. Normal at the point of incidence. Now angle of incidence. What is angle of incidence? Angle of incidence is always the angle made by the incident ray with the normal. ध्यान दीजिए, एग्जाम में जानबूझ के आपको ये 30 डिग्री देगा और आप सोचेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30. नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60. इट इज ऑलवेज द एंगल मेड विद द इंसिडेंट रे with the normal. So this is my known as my I, which is my angle of incidence. I. आप लिखते नहीं है, कहाँ लिख रहे हैं? आप तो दादी माँ की कहानी सुन रहे हैं बैठ के. Children, again try and understand. You are studying here. I can't come desk to desk and see you all are at grade 10. None of you are KG class student. Are you writing? Did you submit your copy? If you don't write, you only get lost out. The more you write, the more you learn. तभी आपकी practice आएगी. और diagrams नहीं है. This year a lot of stress is coming up on diagrams in CBSE. So when you are coming to your science class, come with a scale. Come with a colored pen. Come prepared. I don't want that big bag which you bring. उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. You can wear a t-shirt and you can put 2 pens. Or best is you buy that Hauser pen which has got 4 refills already inside it. How much? 30 rupees or something like that. That has got 4 refills. And bring your running pen and 1 scale. Nothing more. इतना बड़ा बैग लाते हो फिर काम का कोई चीज नहीं है उसमें. आप तो लिख भी नहीं रहे हो. आप अभी लिखना शुरू किए हो. You will be losing out end of the day. So the angle of incidence. Okay, angle of incidence is said to be equal to the angle of reflection. ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा है. State the laws of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Now what is angle of reflection? Angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence. So what we should do, we should now make a reflected ray in such a manner that that reflected ray makes an angle which is exactly equal to I. Okay? So this is my reflected ray and time for me to label this also now. So we had said that this was AO, so let's make this as OB. अच्छा, इसको BO मत लिखिए. हाँ, OB. You have to show the direction also. AO मतलब A से O की तरफ आ रहा है. So this is now OB. OB is my reflected ray. And I is my angle of incidence. R is my angle of reflection. I have given you the list of entire books. Yes. Please do procure those books.
I have also given, please start reading. If you are good from day one, then it's good. In that book, you will say that sir वो elaborate है, elaborate पढ़िए, उसको पढ़ के NCERT make sure, or else if you think that that is too elaborate, take your NCERT, and in NCERT whatever points are there, mark those points on that book, read it from that book, make your notes. If you are good from day one, it will be good. Yeah, I have never studied NCERT. I am also from CBSE. I am studying this book from my days. और वो book होने से आपको NCERT की जरूरत भी नहीं है. Those two books are more than sufficient if you study them. ठीक है? So yes sir. Which books? Lakshmi Singh? Yeah, I'm talking about Lakshmi Singh Manjit Kaur only, Bitu. If you think that PDF every time opening it's difficult, you want to have your copy, grab your copy. Ask to any of your seniors also. रहेगा ही सबके पास वो. Sir, is that old book? I teach. My book is 2011. किस क्लास में थे आप तभी? 1 year old. हाँ, तो वो तब से कोर्स सेम है आज का. Does that answer you? मेरे पास 2011 की किताब है. Today some parent of grade 9 was asking me, should I buy this edition of R.S. Agarwal or this? I said my edition is 2012. मैथ्स वही है, कुछ चेंज नहीं होता है. हर बार एडिशन से 2 पैसे महंगे हो जाते हैं. अब आपकी मर्जी, आप कौन सा लेना चाहो. ठीक है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब फर्स्ट लॉ हर बच्चा बोल देता है. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल. दिस यू विल स्टडी इन ग्रेड 12 आल्सो, बट विद वेव फ्रंट्स. थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है. व्हिच एक्चुअली कैम्ब्रिज चिल्ड्रन इन ग्रेड 9 स्टडी दैट थ्रू वेव फ्रंट. आप इसको 12 में पढ़ोगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस. द सेकंड लॉ जो है ना, उसे बच्चे रट के जाते हैं, उसे बच्चा कोई समझ नहीं पाता. ठीक है? सेकंड लॉ भी लिखते हैं, क्या है? ओके, या सेकंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे I have to get off this one. This is the incident ray, the reflected ray, and normal at point of incidence all lie on the same plane. All lie on the same plane. पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको समझेंगे. This is something nobody is able to explain. They just memorize it and they go and puke it. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. Let's try and understand what we mean by that. Okay. Okay, आइए. This is a plane. What is a plane? This can be a plane. Thought of a plane. ये अभी कैसे ओरिएंटेशन में है? हॉरिजॉन्टल में है. This is a vertical plane. This is a tilted plane. How many planes are there in this particular point? Infinite number of planes can be there in various orientation. अच्छा, अब बात करते हैं कुछ टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए, अपने आप समझ में आया. को-प्लानर, कोलीग्स. कोलीग्स किन्हें कहते हैं? एक साथ नौकरी करने से कोलीग. को-प्लानर. इफ यू आर ऑन द सेम प्लेन यू आर को-प्लानर. सर को-प्लानर का एग्जांपल समझाइए. ये देखो, ये दोनों लाइन सेम प्लेन में है. हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर को-प्लानर और नॉट? कैन टू लाइंस ऑलवेज बी को-प्लानर? 100%. कोई दो लाइन जैसे भी ओरिएंटेशन पे रहे, हम एक कॉपी चिपका ही सकते हैं उनके पीछे. समझ में आया ना? नाउ चेंज इट फ्रॉम 2 पेन्स टू 2 रेज. 2 रे जैसे भी रहे, को-प्लानर हो ही सकता है. पर यहां तो 3 है. कौन कौन है? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और एक नॉर्मल भी आ गया. अगर आप इसे कैमरे का ट्राइपॉड बना दे तो ये को-प्लानर नहीं होते हैं. दिस इज नॉट को-प्लानर. कैन 3 legs of the camera tripod be co-planar? Yes. If your parents' money is much more, break one leg and bring it like this और इसमें पेज लगा दीजिए. Co-planar. लेकिन एक ही orientation possible है. Are you understanding the difference? In 2 legs, in any orientation it is co-planar. But in 3,
there is one and only one orientation in which it is coplanar. Have you understood? So when I say all the three pens lie on the same plane means इनके पीछे एक किताब चिपका सकते हैं. इतना समझ में आया? अभी यहां जाएंगे. Now imagine this interactive flat panel is my reflective surface. और इसके ऊपर एक प्लेन को इंसिडेंट करते हैं, नॉट अ रे. किसको इंसिडेंट करेंगे? प्लेन को. ठीक है? लाइक पीपल यूज दोस बेकिंग स्क्रब्स रहता है ना ऐसे. दिस इज अ इंसिडेंट प्लेन. डू यू एग्री? दिस इज अ इंसिडेंट प्लेन. डू यू एग्री? दिस इज ऑल्सो इंसिडेंट प्लेन. कैसे भी रिफ्लेक्ट होके आ सकता है, लेकिन हमारा लॉ कहता है कि अगर इंसिडेंट प्लेन ऐसा है तो इंसिडेंट रे भी यहां पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहां पे है, एंड नॉर्मल भी यहां पे है. Now do you understand what you mean by all the three rays in the same plane? It means if you are able to appreciate 3D drawing, I'll try to draw just if you are able to appreciate, okay? Say this is your reflective surface, and on this reflective surface, this is a plane. So if your incident ray is here, your normal will be here, your reflective so here. All of them, मतलब आप ऐसा सोच लो कि एक आप अपने घर के जो बेसिन है ना, वॉश बेसिन, उसका मिरर खोल के टेबल पे लगा लो, उसके ऊपर एक और मिरर जैसा या एक टी ट्रे जैसा कुछ भी लेके आओ, एंड दैट ट्रे कैन बी केप्ट इन एनी अलाइनमेंट, व्हिचएवर अलाइनमेंट यू कीप. इंसिडेंट रे भी उसके ऊपर चिपका हुआ है, नॉर्मल भी उस पे चिपका हुआ है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम दे विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस. ऐसा कुछ नहीं. दे आर कोप्लानर. नाउ दे आर कोप्लानर. मैंने कोप्लानर बना दिया तीनों को. अब ये ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, जैसे भी आए, they are all in the same plane. Do you understand now? Clear? Anyone has any doubt? Between three lines can be coplanar in only one orientation. रे भूल जाओ, हम ज्योमेट्री में चलते हैं. Two lines are always coplanar. Three lines can be coplanar only in one orientation. और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, एक ही प्लेन पे हो सकता है. अब आप बोलोगे सर मैं तो आपको पसंद नहीं करता, मैं ट्रक ऐसे ले आया. अरे भूतनी के, ऐसे भी लाया तो प्लेन तो वही है ना, प्लेन थोड़ी चेंज हुआ है ना, प्लेन तो चेंज नहीं हुआ. सर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब तो कोप्लानर नहीं है. कोप्लानर होने के लिए आप कैसे भी घुमाओ पर प्लेन वही होगा. सर मैं अगर ऐसे घुमाऊं, घुमा ले भाई साहब, तो ये प्लेन है, कोप्लानर. अंडरस्टूड? नाउ टेल योरसेल्फ, रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ? व्हाट इज रिफ्लेक्शन एज अ फिनोमिनन? कोई आपको ग्रेड 10 में पूछेगा नहीं डिफाइन रिफ्लेक्शन. अगर पूछ, नहीं, कोई नंबर नहीं है, अभी नंबर से कुछ नहीं आ रहा है. अभी आप सिर्फ ग्रेड 8 को रिवाइज कर रहे हो, और उसमें आपको पहला चीज सीखा हमने, व्हाट इज रिफ्लेक्शन. Is reflection as a concept clear to you? For reflection to happen, what all things are needed? A reflective surface. What is the best example of a reflective surface so far? That is a reflective material, plane mirror. रोज देख के टा 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 ऐसे बाल बनाते हैं ना, ऐसे, वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है. समझ में आया? और क्या चाहिए? एक इंसिडेंट रे चाहिए, नॉर्मल एक चाहिए, और एक रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां से लॉ पैदा हो गया है that the angle of incidence should always be equal to the angle of reflection. And the second law says incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence are always on the same plane. हाँ, 12th क्लास में आएगा आपको, you'll get it. They'll all come out angle same. Okay, उसके लिए आपको secant weekend जानना होगा, अभी टाइम है उसके लिए. आने वाले गम को आज ही मत बुला के लाइए, आराम से आने दीजिए. Your life will be hell. Why are you calling it today only? Wait for it. ठीक है, ये सीख लिया. So we are still at grade 8 level. Is this fine? One more topic, two more topics for today before we get into our actual chapter. अच्छा आइए, अब बात होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये सब ग्रेड 8 में पढ़े थे, देखता हूं कितना याद है. वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. कोई बच्चा बता पाएगा मुझे क्या है? कुछ भी कोशिश तो कीजिए, गलत हो ही सकते हो. Regular reflection, like एक एक करके सुनते हैं. plane surface, rough surface. अच्छा, Light rays are scattered. लाइट रेज आर स्कैटर्ड, और All the space is scattered into
ऑल द रेज, कौन से रेज भाई साहब? ऑफ द बीम, कौन से बीम? ऑल द रेज मत बोला करो, इंसिडेंट रे एक होता है और एक रिफ्लेक्टेड रे होता है, दो ही प्रजाति है. सी हाउ प्रिसाइज योर डेफिनेशन शुड बी. यस फ्यूचर. When a beam of parallel ray strikes the surface, better, and the reflected rays are also parallel, then such a sort of reflection is known as regular reflection. तो फिर irregular क्या है? तो पहले regular reflection जो भी ट्यूशन ने बताया उसको ड्रॉ करके देखते हैं. You have a reflective surface, और हमारे लिए reflective surface God has given to us is known as a plane mirror. What our friend Piyusha is trying to say, when a beam of parallel incident rays, है ना, ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है हमारे. क्लियर ऑल ऑफ यू? दीज पैरेलल इंसिडेंट रेज गेट रिफ्लेक्टेड व्हाट? पैरेलली. गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलली. इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड. ठीक है, होल्ड करते हैं. व्हाट इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? एनीवन? हाँ, इरेगुलर तो वही है. होता क्या है उसमें वो तो बताइए. अच्छा, मतलब आप ऐसे, ओ बाप रे, हाई इंग्लिश हो रहा है सब कुछ ऐसा. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे. ऐसे होना चाहिए ना. बहुत अच्छी बात है. पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे. और रिफ्लेक्टेड रेस कैसे होंगे? कहीं पे भी. चलो कहीं पे भी करते हैं इसको. एक ऐसे गया, अरे इसको ब्लू से इतना प्यार क्यों है? कहीं से ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये कुछ ऐसे गया. इज दिस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? यस. क्वेश्चन अराइजेस, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? Yes. 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 है तो फिर ऐसा क्यों बन रहा है? The surface not. नहीं नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यहां नो कौन बोल रहा है? यहाँ पे यस है. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कितने लोग नो बोलते हो? हाथ उठाओ. 1 2 3. क्या वेदन? सोच. यस. क्यों यस है? मुझे तो नहीं दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये कहाँ दिख रहा है तुम्हें? तुम बताओ मुझे. यहाँ में दिख रहा है क्या? So like each pair of like incidents and reflected ray, like it has a normal rate, so the angle will always be equal. But the beam is not. आप लोग ना एक चीज नहीं सोचते हो. इससे पहले थोड़ा देर पहले आपने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ होता है भाई. लॉ कभी चेंज नहीं होता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपका टांग टूट गया, इसका मतलब आप रेड लाइट में चलना शुरू करेंगे क्या? नहीं ना. लॉ है. क्या यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है? यस. यहां हो रहा है? यस. तो फिर रिफ्लेक्शन का कानून फॉलो होना पड़ेगा. पर हमारा मन नहीं मानता है. मन तो नहीं मान रहा है ना. यहाँ पे कहां हो रहा है? तो अगर मन ऐसा आपका नहीं मानता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मन को मानने के लिए इतना सा सरफेस जो है ना, इसको आई एम वेरी सॉरी, हाँ आज ना दिस, सो इतना से सरफेस को हम क्या करेंगे? ट्राई एंड सी दिस मच सरफेस इन अ मैग्निफाइड फैशन. ये सरफेस को मैग्निफाइड. What you are thinking that it is a smooth surface, it is not smooth surface. It is very irregular. Right now you are writing on an IKEA table, costly, considered to be very smooth. It is smooth mechanically, not optically. Optically ये smooth नहीं है. Optically smooth क्या है? This glasses, mirrors, ये हमारे optically smooth है. तो ये surface कुछ ऐसा होता है. ऐसे अंड्यूलेशंस है. आइए इसमें अभी लॉ लगाते हैं. कैसा लॉ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. पैरेलल बीम्स आना चाहिए ना. ये हमारे पैरेलल बीम्स आ रहे हैं. ठीक है, पैरेलल बीम्स. देन यू शुड हैव नॉर्मल एट द सरफेस. सो लेट मी मेक द नॉर्मल. नॉर्मल्स आर ऑलवेज नॉर्मल विद द सरफेस. And now you make the reflected rays with the same law, angle of incidence equal to angle of reflection.
Are your reflected rays parallel? No. Reflected rays are not parallel. But is the law of reflection followed? Yes. Now question again. Which one is more beneficial to us? This one is more beneficial to us. Not regular reflection. Regular reflection का मतलब कैसा होता है पता है? If any one of you have a glass dining table at home, glass का dining table आपके घर पे है ना, तो उस डाइनिंग टेबल के ऊपर टेबल लाइट लगा के पढ़ना शुरू कीजिए. कैसा रहेगा? नीचे से एक और टेबल लाइट दिखेगा आपको. Sometimes you get into a Bajaj electronic showroom, switch off all the televisions. समझ में आया? And then make यथार्थ walk. चारों ओर यथार्थी walk हो रहा है. If it was regular reflection, everything is reflecting around us. नहा के आके बाहर निकलोगे तो सोचो अपना ही कितना एमएमएस बन गया है चारों तरफ, देखो, है ना? समझ में आ रहा है? What is happening every day is not regular reflection, diffuse reflection. Your book is rough. And rough, that's why you don't see another impression. आपको अपना मुंह दिखता है क्या उसमें? But if you shine your shoe too much, you do see your face. The pitch is very shiny. You can see your face. That means like this Marbonite floor, we are able to see this tube light right on the floor. Is a diffuse reflection happening out here? No. This is neither completely good reflection nor diffuse reflection. But for us, at the everyday world to be good, we want diffuse reflection to happen. Is diffuse reflection clear? No doubt. Take it. And now the last part of grade 8. फिर ही आप समझोगे ग्रेड 10 की कहानी. Characteristics of image formed by a plane mirror. Characteristics of image formed by a plane mirror. Whatever we are learning today in the book of Lakshmi Singh of spherical mirrors, mat padhiye aage. Till spherical mirrors, do read. Just read. Don't expect any questions from that part in your board, but this thing should be clear in your head. So let's take a plane mirror. है ना? अब किसको खड़ा कर दें यहाँ पे? अपना तो है भाई, दीपांशु साहब को खड़ा करेंगे यहाँ. ये दीपांशु है और यहाँ पे एक और दीपांशु, ठीक है? और एक चीज कर देते हैं, दीपांशु जी शॉक पहन के बैठा है, कैसियो जी शॉक. चलिए, what are the image formation, what are the characteristics of image formation by a plane mirror? Number 1, image distance will always be equal to the object distance. If you are standing 5 meters in front of the mirror, your image will be exactly 5 meters behind the mirror. Number 2, image height will always be equal to object height. ऐसे 5 properties होता था. 3, the image will always be erect. Like many in ladies, this is a common phenomenon. They say ना, तुम्हारे मिरर में ना मैं बहुत मोटी दिखती हूँ. मैडम आप मोटी है इसलिए मोटी दिख रही है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन कहता है इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट. अगर आप मोटी दिख रही हैं तो 2 प्रॉब्लम है. वो मिरर जो है वो प्लेन मिरर नहीं है. If you see yourself slightly aberrated in the mirror, which is possible, then that mirror is not a plane mirror. अगर ये प्लेन मिरर है तो आप हूबहू वही दिखना चाहिए जो आप हैं. Image distance is object distance. The image is always erect. What is the opposite of erect in optics? We call it as inverted. Tilted मत लिखना. Inverted. Inverted मतलब उल्टा image आना. Okay. 4th point, what I am writing, just absorb it. The image is virtual. The image is virtual. Virtual क्या है? थोड़ी देर बाद देखेंगे. ठीक है? Virtual. In Hindi we call it आभासी. Virtual का एक और word होता है non-real. Non-real. This point we are going to study. Don't leave it. And the 5th and the most important, हमने दीपांशु को जी शॉक क्यों पहनाया था? हमने दीपांशु को जी शॉक इसलिए पहनाया था क्योंकि जी शॉक अब हमें इस हाथ में दिखने वाला है. What is this called? The image is laterally inverted. We never understood this properly, but you all are from the generation of selfie, so you understand what is lateral inversion. Laterally inverted.
नॉर्मल पल्लू साड़ी लेडी लुक्स लाइक ए गुजराती लेडी, उल्टा पल्लू हो जाता है, क्यों? इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। समझ में आया? और यहीं से सवाल आता है, व्हाई आर द लेटर्स इन द वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन लैटरली इन्वर्टेड? व्हाई इज एम्बुलेंस रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर? बच्चा क्या आंसर देता है पता है? लैटरल इन्वर्शन, लैटरल इन्वर्शन। You should understand, when the ambulance is behind you, then the reflection of the ambulance on your driving mirror will give an image which will be laterally inverted. So if he writes it in the right orientation, you see it ulta. So he writes it ulta, so you see it seedha, straight. Clear? So 5 more minutes as we talk little bit about this thing called image. So what is an image? An image is an impression. An impression formed by intersection of reflected or refracted. As of now, refracted portion को just absorb कीजिए. Reflected or refracted rays. So we understood one thing, that image form होने के लिए reflected or refracted rays have to intersect. Our chapter is about reflection, so we will consider on this. Reflected rays have to intersect. This is very important. Formed by intersection. Intersect होना है. अगर intersect नहीं हुआ तो क्या होगा? That will give you rise to what is known as real and inverted. So let's see one example out here, or an illustration out here. Let's say we have a plane mirror like this, right? And say you have an object. Say यहाँ पे एक object, an object like this, right? Now, from the object, say a ray is incident on the mirror in this manner. So where is the normal? The normal is somewhere here. Reflected ray कैसा आएगा बेटा? Reflected ray आपका ऐसा आ जाएगा. Have you understood? Okay. Now, usually where do you see your object? Object distance will be same. आपको आपका object यहाँ पे दिखेगा, right? Object का image आपको यहाँ पे दिखेगा. So how does the image get formed? My drawing is not absolutely perfect. So let's say you have another ray, which says coming in this manner, incident ray. So let's say this is my normal. The reflected ray will go this side. Now look at the two reflected rays. I'm very sorry, from next day we'll use a different software. The two reflected rays are reflected and are getting diverged. ये reflected rays दोनों क्या हो गए हैं बेटा? Diverge हो गए हैं. ये इस साइड में कभी भी मीट ही नहीं करेंगे. और image form होने के लिए मैंने क्या बोला था? That the rays have to intersect, reflected rays. So when the rays actually do not intersect, another way is that you extrapolate the rays. हम rays को क्या करते हैं? Extrapolate means pulled backwards. They must have originated from some common point. That is what we try to say. That is also a point of intersection. But in such a case, the image that you get is known as a virtual image. So when we talk about image, we have two types of images. Yeah. We have two types of images. One is known as a real image and one is known as a virtual image. Real image are formed by actual intersection. And this is our entire study. Majority, 98% cases that we will see, all geometry will be real images and virtual will be through extrapolation. Extrapolation means they are pulled backwards. Rays actually do not intersect. They are known as virtual images.
So the image that you see in a plane mirror, जो आप रोज अपने आप को ड्रेसिंग करते वक्त जो इमेज देखते हो, that is a virtual image, that is not a real image. Further we say a real image can be taken on a screen. In movie theaters, what you see is all reflection. Projector reflections are happening. That is actually a real image. Virtual images cannot be taken on screen. The way you comb your hair or you shave or you dress, you just see a virtual image. You can't take it on a screen. That is kalpanik. That's why in literature and drama, whenever they have to show your conscience, where do they show your conscience? Have you seen in serials and movies? When somebody has social connection to zero hai, cultural connection. In movies and other scenes, they will show you when a person is repenting of doing something, then he actually stands in front of the mirror and the same his conscience starts speaking from other side of the mirror. तुमने आज ये काम ठीक नहीं किया, इसलिए कि वो काल्पनिक है. That's why that is the literature part of it. So the image that we see in a plane mirror will never give me a real image. So let's talk about image. इसके बाद ही हमारा ये part खत्म होता है. We get ready for our chapter. So what is an image? An image is an impression which is formed due to the intersection of reflected, that is the current chapter. The next chapter is about refraction. जैसे मैं आपको देख रहा हूं, I am seeing you through mirrors? No, through lenses. Lenses में refraction होता है. I am also seeing you. Now I am seeing you. Now I am seeing your image. Have you understood? So images can be formed by intersection of rays, post reflection or refraction. Right now we'll concentrate only on reflection. If the reflected rays are actually intersecting, then what do we call it? Real image. A real image can always be taken on a screen. It is the different thing. Many people think real matlab erect image. No, real can be inverted also. No doubt about that. It can be inverted. Many of the scenarios we will see inverted only. 99% में हमें inverted ही दिखेगा आगे जब हम पढ़ेंगे. अच्छा, अब स्टोरी लाइन समझते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं. So far we have all studied about grade 8 concept. We spoke only about plane mirror, plane mirror, plane mirror. Grade 10 does not talk about plane mirror. Grade 10 will talk about spherical mirrors. Curved होगा आपका mirror, जहां से concave और convex mirror का जन्म होगा. This is what we are going to study and our exact chapter starts. But we should know image. Image can be real or can be virtual. What are virtual images? Virtual images are formed by the extrapolated intersection of reflected or refracted rays. They are not actually intersecting. The rays have been pulled backwards to make them intersect. ऐसे केस में images को हम बोलते हैं unreal image or virtual image. They cannot be taken on screen. Can you give an example? Well, the image of myself on a plane mirror that I brush my teeth every day in the morning is a virtual image. And can you give an example of a real image? The image of a movie screen is images that are displayed on a movie screen are examples of real images. 1 minute quick recap and then we stop for the day. We started with light. Light को एक source of energy बोला जाता है. Propagation कैसा है? Wave nature भी है, particle nature भी है. When you talk about particle nature, light is supposed to compose of very fast moving particles which are called as photons. And why do we say particle nature? Particle nature supports things like reflection, refraction, shadow formation, whereas wave nature will support interference, polarization, diffraction, which we will study later. Light is a small portion of the entire electromagnetic spectrum of the sun. It is between the ultraviolet and the infrared portion, which is generally denoted by VIBGYOR, starting from violet and ending in red. 400 to 700 nanometers, where बड़ा ही छोटा सा पोर्शन रहता है. लाइट को फिर इस चीज को ब्रांच को दो स्टडी में किया जाता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स डील्स विद द ज्योमेट्री पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स. हियर स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग इन साइज एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ, whereas in wave optics it deals with the wave nature, where the structures are very comparable to the wavelength. Means you're talking absolutely small structures. We move to our ray optics. First we define what is a ray. An artificial impression to show the propagation of light, generally shown by an arrow, and the head shows you the direction of propagation, tail shows you the origination. Group of rays is known as a beam. After that we move to a reflective surface. A reflective surface best is explained by a plane mirror.
A plane mirror is denoted by a straight line with an edge. What is a good reflective surface? Silver is the best reflective surface. Okay. Objects can be classified as transparent, translucent, and opaque. Then in plane mirror, we saw that characteristics of image formation by a plane mirror: object distance, image distance are same, object height is equal to image height, then the object is erect, the image is erect, then the image is laterally inverted, the image is virtual. ठीक है? और क्या हमने देखा इसके अलावा? The laws of reflection, the incident ray. So whenever you have a reflective surface, you'll have an incident ray. It is always incident at the point of incidence. There you have what is known as the normal at the point of incidence. Angle between normal and incident ray is known as the incident angle or angle of incidence. And then we will have a reflected ray. The angle that the reflected ray makes with the normal is known as the angle of reflection. The law says angle of incidence should be equal to angle of reflection. Incident ray, reflected ray, and normal all lie on the same plane. Is it true for every reflective surface? As long as you are reflecting, the law of reflection is valid. Spherical mirrors में valid है सर, मेरे अगर बाल गिर के सर गंजा भी हो जाए और यहां से भी रिफ्लेक्शन हो ना, तो यहां भी वैलिड है. समझ में आ गया है? वो भी तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ही है ना, तो यहां भी वैलिड है. क्लियर? बस इसके अलावा कुछ नहीं. अगले क्लासेस से ये जितना कुछ पढ़ा, क्या ये 10th में आने वाला है? नहीं आने वाला. अगर ये नहीं जान के आप रिफ्लेक्शन में 99 भी स्कोर करते हो, तो यू आर वेल ट्रेन्ड. हंटर के डर से शेर भी टेबल पे बैठता है, उसे हम वेल एजुकेटेड नहीं, वेल ट्रेन्ड कहते हैं. तो आप वेल ट्रेन्ड हो, वेल एजुकेटेड नहीं. नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्फेरिकल मिरर्स. नेक्स्ट क्लास व्हेन यू आर कमिंग, please bring a protector, not for angle measurement. You will need it because initially you won't be able to make good mirrors. The protector will be used for making the curved surface. Please bring these things, get with you. एक और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. 6 इंच रूलर लेके आइए. अगर आप 12 इंच लाएंगे तो बहुत ही अच्छा है. Right? You get one. You get your pens in black, and you get your pen in red, and your writing pen which can be blue. Avoid gel pens. I hope you know. हाँ, ये पेन CBSE में नहीं चलते हैं आपके, आपको बॉल पॉइंट में शिफ्ट करना पड़ेगा. So avoid your gel pens because अगर आपका ड्राइंग खराब हो जाएगा. These things are needed, and also have a protractor. And if you have not purchased a notebook, avoid ruled books. Science कभी भी ruled book में नहीं पढ़ा जाता है. नहीं नहीं नहीं. It always has to be either interleaved, we say, or else it should be a blank copy. White pages are the best to study science. Otherwise, your figures will never look good. Clear? Right then. So we'll break now and we join next class. And next class we will be having on chemistry first chapter. उसमें और कोई ज्ञान नहीं है, वो शुरू हो जाता है.